अस्सलाम वालेकुम। इस सीटिंग में हम थोड़ा सा बामहावरा तर्जुमा कैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया जाता है उसके चंद एक सेंटेंसेस का तर्जुमा करके आपको दिखाएंगे, और उसके बाद इज़म्स यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इज़म्स, मुख्तलिफ जो थियरीज़ हैं उन पे थोड़ा सा उनकी वर्ड्स जो कायम हुए हैं उसमें इज़म्स के लिए, तो चंद एक वो डिस्कस करेंगे। जैसे उर्दू में अगर हम ये कहें कि मैडम क्या आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं, तो जो अच्छा ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो बनेगा, मैम आर यू फिक्सिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, यानी क्या आप मेरे लिए नाश्ता बना रही हैं। इसी तरह से अगर आप ये कहना चाहें कि हमने फैसला किया कि हर शख्स खाने का अपना अपना बिल अदा करेगा, हम कहें कि वी डिसाइडेड टू गो डच ऑन द डिनर, वी डिसाइडेड टू गो डच ऑन द डिनर। तो अगर हम ये कहें कि क्या हम वही बचा खुचा खाना दोबारा खाएंगे, तो हम कहेंगे आर वी हैविंग लेफ्ट ओवर अगेन, आर वी हैविंग लेफ्ट ओवर अगेन। अगर ये कहा जाए कि वो खाने के मामले में नखरे नहीं करता, मतलब क्या कि वो जो मिल जाए वो खा लेता है, तो वो खाने के मामले में नखरे नहीं करता, तो इंग्लिश में होगा ही इज नॉट अ पिकी ईटर, राइट, ही इज नॉट अ पिकी ईटर। अगर ये कहें कि वो वेटर जो था, वेटर जब बिल लाया तो वो बैतुल खला में था, तो वेटर ब्रॉट द बिल व्हाइल ही वाज इन द रेस्ट रूम। ठीक है, तो एक इडियोमेटिकली मेटाफोरिकली रेस्ट रूम भी कहते हैं बैतुल खला को। तो द वेटर ब्रॉट द बिल एंड ही वाज इन द रेस्ट रूम, जब वो बिल लाया तो वो बैतुल खला में था। अब हम थोड़ा सा इज़म्स यानी फिलासफीज जो मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं उनके बारे में, जो वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स टेक्निकल जो इस्तेमाल हुए उनको डिस्कस करते हैं। तो जब आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, यू आर एडहियरिंग टू द बिलीव्स एंड यू कैन से राइट्स एंड कस्टम्स एंड नॉर्म्स ऑफ योर ओन कम्युनिटी, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। इसी तरह से अगर आप किसी वक्त ये यकीन रखते हैं, या आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो कहते हैं कि मटेरियल गेन्स या मटेरियलिज्म या मटेरियल चीज़ें जो मादियत है उससे आगे कुछ नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें या सुपर नेचुरल या उन फोर्सेस में आप यकीन नहीं रखते, या आपको गॉड को या अल्लाह को नोएबल नहीं समझते, कि इफ़ वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज गॉड और अल्लाह इन फिजिकल फॉर्म, सो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आप मटेरियल एग्जिस्टेंस जो मादे की है उसी पे यकीन रखते हैं, वही आपका सब कुछ है। दिस इज कॉल्ड एग्नोस्टिसिज्म। इसी तरह से अगर आप एक सेक्सुअल परवर्शन होती है, साइकोलॉजिकल कह लीजिए प्रॉब्लम होता है लोगों को, कि दे फील प्लेयर बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन अदर्स, दूसरों को सेक्सुअल एक्ट के दौरान वो तकलीफ दे के, मार के प्लेयर महसूस करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सैडिज्म। और इसी तरह मुखालिफ जो सन्फ है या कह लीजिए मुअन्नस है या मुज़क्कर है, जो भी है, तो अगर वो अपने मुखालिफ से मार खा के या पनिशमेंट लेके या पेन लेके प्लेयर महसूस करे, तो इसको हम कहते हैं मैसोकिज्म। इसी तरह से अगर आप अच्छाई में और नेकी में प्लेयर महसूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेडोनिज्म, यानी आपको नेकी में, गुडनेस में प्लेयर महसूस होता है, तो हेडोनिज्म। एक वर्ड होता है पैंथीज्म, तो वहाँ पे आप ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है उसको हम मुख्तलिफ दूसरी शक्लों में देखते हैं। जैसे आंधी आ गई, जल्जला आ गया, तो हमने कहा ये बरह रास्त गॉड जो है, वो फोर्स जिसको हम गॉड कहते हैं, दैट इज एक्टिंग अपॉन दिस और बिहाइंड दिस।
تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پینتھیزم. اسی طرح سے کہ if you are advocating and theorizing that peace should be all around in your environment or surroundings, تو اس کو ہم کہتے ہیں پیسیفزم. PACIFISM، پیسیفزم. اسی طرح سے if you see evil all around، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ there should be anarchy and evil، so this is called nihilism. تو اسی طرح سے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ اسپریچولی جو ہے کوئی morality ایگزسٹ نہیں کرتی، کوئی اسپریچول پاورز نہیں ہے، تو دس تھیوری از کالڈ nihilism. اسی طرح سے when you are not believing in any god، کسی بھی مذہب، کسی اس طرح کی گورننگ فورس جو یونیورس کو آپریٹ کر رہی ہو، اس میں بلیو نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں پیگنزم یا ایتھیزم. اسی طرح سے ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان جب امریکہ گئے تو وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں اسپیچ کرتے ہوئے امریکن نیشن کو یہ بتایا کہ what were the reasons in the perspective or on the background of having a separate homeland، کہ کیا وجہ تھی کہ ہم علیحدہ ہوئے ہندوز سے. تو اس میں ایک جو بہت بڑی مین ریزن تھی کہ ہندوز were polytheist، یعنی they were believing in polytheism، وہ they believed in many gods and we believed in one god، یعنی we were monotheist، they were polytheist. So polytheism and monotheism means believing in one god and polytheism means believing in more than one gods or many gods. اسی طرح سے ایک اور ہوتا ہے سوفزم، SOPHISM. تو دس از ایکچولی فالس ریزننگ. ٹھیک ہے، جب آپ غلط لاجک استعمال کرتے ہیں، اور جو آبجیکٹو ہوتا ہے اس کے غلط استعمال کرنے کا وہ ہوتا ہے کسی کو ڈیسیو کرنا، اپوننٹ کو ڈاج کرنا. وین یو آر انٹینڈنگ ٹو ڈاج یور اپوننٹ اینڈ یوزنگ دا آرگیومنٹس رانگلی، تو اس کو ہم کہتے ہیں سوفزم، فالس ریزننگ. اسی طرح سے ہیلنزم از ایکچولی ریلیٹڈ ٹو گریک mythology and customs and norms. When you are impressed and influenced by Greek history and gods and mythology, so you are advocating the ideas and thoughts of Greek nation in the past, which was no doubt the greatest nation in the past, particularly with reference to theoretical knowledge, philosophy, science, in every sphere of life. If you are advocating the thoughts and ideas of Greek nation past, so that is called Hellenism. So when you are believing in God but not in revelations، جب آپ یہ تو بلیف رکھیں کہ اللہ تو ہے مگر وہی سے انکار کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیزم. اسی طرح سے when you are believing in oneness of Allah، one God or Allah، so that is called theism. اسی طرح سے when you select and opt for one God for your tribe، so that is called henotheism. Sometimes you are very optimist and you believe in the positive side of things، the bright aspects of the things. اردو میں اس کو رجائیت پسندی بھی کہتے ہیں، جب آپ امید افزا اور ہر چیز میں امید دیکھتے ہیں، you are not disappointed. So that is called optimism، the theory of believing in positive aspects of life. اس کا الٹ جو اپوزٹ ہے وہ ہے پیسیمزم، when you are disappointed and you are seeing always the dark side of things، چیزوں کی وہ مایوسی والی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ. تو پیسیمزم. And baptism, this is the rite in Christianity when a child is born
So liquid or water is sprinkled over his body. It is the declaration that he is Christ by birth. Now onward he would be a Christian. क्रिश्चियन चर्च में ये एक जो राइट या रस्म या उनकी है बैप्टिज्म. इसी तरह से when you are believing in the fundamental thoughts and ideas of the past, you are sticking to the past. You are not liking the changes or radical changes. So you are called conservative, and the theory you are following is conservatism. कदामत पसंदी कह लीजिए. एक है कि जिंगोइज्म. तो when you are by temperament, जैसे चंगेज खान है, डाकू खान, हर वक्त यानी सारी जिंदगी जंगों में हिलाक लोगों को हिलाक करना और खोपड़ियों के मीनार बनाना और उनको आग लगाना और शहरों के शहर जला देना, और जैसे बगदाद के साथ जुल्म हुआ कि लाइब्रेरियां जला दी, तो बगैर किसी चीज की परवाह किए हर वक्त जंग का एक जनून सा तारी रहना. दैट पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग वॉर इज कॉल्ड जिंगोइज्म. जस्ट लाइक दैट व्हेन you are follower of American policies, American theories, American culture and civilization, so that is called Americanism. In the past, there were tribes who were not tamed and civilized, as the example is Mongols. They were devastating and you can say perishing all the things coming in their way and under their feet. They mercilessly slaughtered the people, the whole of the tribes and the cities. So when you are not cultured and do not know how the civic sense, how to live together, brotherhood वगैरह से आप नावाकिफ होते हैं, you're just like a beast and you use your force and tyrannize the others. This is called barbarism. Yani absence of any mercy or something, that is called cultural values. वो जो नहीं होती हैं तो barbarism. Alcoholism, when you are addicted to alcohol and support its widespread use, alcoholism. Racism, race, nasal, generation. So sometimes the mainly divided races were white and black. So when you are dealing the people or other groups or population or community on the basis of skin color or which tribe you belong to, so this is called racism, nasal parasti. As in South Africa, before blacks rule and Nelson Mandela's, you can say, rule regime, तो एपाथेट वाज देयर, यानी नस्ली तासुब था, और वाइट जो है वो ब्लैक को जानवरों से भी बदतर समझते थे. तो इफ यू आर बिलीविंग इन रेस एंड रेशियल एलिमेंट्स, द स्टैंडर्ड ऑफ dividing the people or population, this is called racism. And other is sexism. When you are dealing and treating the fellow beings on the basis of sex, for example, in many cultures, women are regarded just as a commodity or tool, an inferior being. So this is called sexism. Feminism is actually contrary to it. Due to awareness, people started supporting a good treatment with the women or towards the female section of society. So that is called feminism, the people who are supporting it. Sexism, I was explaining. Fanaticism is another word. When you are enthusiastically supporting some cause or something beyond limits, यानी आप जुनूनी हद तक किसी चीज की सपोर्ट करते हैं, this is called fanaticism. Excessive enthusiasm towards something. Vernacularism, supporting your native tongue and your own language, preferring it and trying to disseminate it throughout the world or in the region. This is called vernacularism. Nepotism,
when you are supporting your own relatives and the people who are favorite to you, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं अकरबा परवरी, और इंग्लिश में to support your relatives and acquaintances and the people who are your favorite. Confucianism. Confucius was a philosopher, Chinese philosopher, so his philosophies are supported by people. So people who support Confucius philosophies are called, that school of thought is called Confucianism. Yes, sorry, Confucianism. Just like is this one, there is despotism. So despotism is actually seeing the things through tyranny and cruelty. When you see the things with tyranny, mirror of tyranny and cruelty, this is called despotism. Yani you are supporting war and tyranny and sort of that. Stoicism. Stoics are people who are controlling their desires, bodily desires, carnal desires. For example, eating, drinking, sex, like that. So when you are actually self-controlling, denying yourself the desires, this is called stoicism. Solipsism. When you say that self, या आपकी जो ज़ात है, that exists and that's all, बस आपकी ज़ात ही इस कायनात का महवर व मरकज़ है और वही कुछ है जो एग्जिस्ट करता है. तो solipsism. So these were actually certain words of isms or philosophies which we discussed in today's sitting. So inshallah, in another sitting, we would discuss isms which are left over. Thank you. Khuda Hafiz.